जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला, है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में, तू पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा, मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा, तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा। तेरा सुमिरन हर पूजन में, तेरा सुमिरन हर पूजन में, सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया, तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया, मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जान,
तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, 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 जय गणपति वंदन। जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, जग रोए, जग रोए। रे साधो सहज समाध भली, रे साधो सहज समाध भली। गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, गुरु प्रताप जा दिन ते जागी। दिन दिन अधिक चली हो, दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाध भली, रे साधो सहज समाध भली। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन। खाओ पियो सो है पूजा, ओ खाओ पियो सो है पूजा। साधो
साधो सहज समाध भले। गुरु परताप जा दिन ते जागे, गुरु परताप जा दिन ते जागी। दिन दिन अधिक चली हो, दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाध भले। रे साधो सहज समाध भले। आँख न मूंदो कान न रूंदो, आँख न मूंदो कान न रूंदो। तनिक कष्ट न धरो ओ, तनिक कष्ट न धरो। खुले हसी खुले नैन पहचानो, हसी हसी सुंदर प्रीतम निहारो। साधो सहज समाध भले। साधो सहज समाध भले। गुरु परताप जा दिन ते जागे, गुरु परताप जा दिन ते जागे। दिन दिन अधिक चली हो, दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाध भले। साधो सहज समाध भले। कहे कबीर ये उन्मुनि रहनी, कहे कबीर 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 कबीर। कहे कबीर ये उन्मुनि रहनी, कहे कबीर ये प्रगट करी जो है गाई ओ, प्रगट करी जो है गाई। दुख सुख से परे कोई परम पद, दुख सुख से परे कोई परम पद। तेहि समाई साधो सहज समाध भले। साधो सहज समाध।
अजब बना महाराज बंगला, अजब बना महाराज, जिसमें निर्मल माँ बोले बंगला, अजब बना महाराज। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कोई न दिखे, आवत जावत कोई न दिखे, ये भी एक अचंबा, बंगला अजब बना महाराज, जिसमें निर्मल माँ बोले बंगला, अजब बना महाराज। इस बंगले में चौपड़ माली, खेले 5-25, इस बंगले में चौपड़ माली, खेले 5-25, कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जुग जीता, बंगला अजब बना महाराज, जिसमें निर्मल माँ बोले बंगला, अजब बना महाराज। इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजावे, इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजावे, निरत सुरत का बांध के घुंघरू, निरत सुरत का बांध के घुंघरू,
राग छती गावे, बंगला अजब बना महाराज, जिसमें निर्मल माँ बोले, बंगला अजब बना महाराज। कहे मछंदर सुन जती गोरख, जिन ये बंगला गाया, कहे मछंदर सुन जती गोरख, जिन ये बंगला गाया, इस बंगले का गावनहारा, इस बंगले का गावनहारा, बहुरी जन्म नहीं पाया, बंगला अजब बना महाराज, जिसमें निर्मल माँ बोले, बंगला अजब बना महाराज, जिसमें निर्मल माँ बोले, बंगला अजब बना महाराज, बंगला अजब बना महाराज, बंगला अजब बना महाराज। जय श्री माता जी। सहज योग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार्य हो। परम पावनी मां के चेतना सागर में सर्वस्व समर्पित करते हुए गुरुवार की इस मंगलमय भोर में मां के हम अति शुभकर बच्चे मां की चेतना में निखरे हुए मां के ही प्रेम को प्रतिबिंबित करते हुए पूरे ब्रह्मांड में अपनी चेतना के माध्यम से मां के प्रेम का सबूत देते हुए और स्वतः ही ये चेतना उद्घोष करती है मां के प्रेम का, मां के सत्य स्वरूप का। और इस सामूहिक चेतना के आनंद में आज पूरा विश्व उस प्रेम को महसूस करता है। ये चेतना का आनंद हमारा स्वभाव है। हम भूल गए थे कि हम कौन हैं, और मां ने हमारे मन के भ्रम को दूर कर सत्य को प्रकाशित कर दिया। तब हम
मां की करुणा में अपनी अबोध अवस्था में उस स्थिति को पा गए और अपनी मां को पहचान गए। और जब मां को हमने हृदय में पहचाना, हमारा रोम रोम आनंद से खिल उठा। कहा गया है, एक को हम बहु सयाम, मैं एक हूं, मैं चेतन स्वरूप अखंड ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और मैंने स्वयं को अनेक रूपों में विभक्त किया है। और जब हम सत्य को पहचानते हैं तो कबीर की बात याद आती है। कहे कबीर, सुन भाई साधो, तू क्यों भूल गयो, अगर ये दुनिया माया में भ्रम में भूल गई तो सत्य साधक कैसे भूल गए। और मां की कृपा में जो सत्य साधक है, आज वो सहयोग में आनंद में है। और यही आनंद आज हमारा मां की कृपा में स्वरूप है। और इसके लिए वास्तव में हमने कुछ किया नहीं, स्वतः ही घटित होता चला गया। शुरुआती दौर में जरूर हम अपनी ईड़ा और पिंगला को चेतना के माध्यम से देखकर मध्य मार्ग में आते हैं और मन से परे जाकर सत्य में स्थायी भाव में समाहित हो जाते हैं। तब हम बन जाते हैं जिसे सभी ने कहा, संत ज्ञानेश्वर ने भी कहा, जब आप वो बन जाते हैं तो आप उसकी सुगंध से एक रूप हो जाते हैं। जैसे आंख आंख को नहीं देख सकती, जीभ जीभ को नहीं चख सकती, वैसे ही जब आप स्वयं अपने स्वरूप में समाहित हो गए तो बनना नहीं है, वो आपका होना है। बनने से होना ये एक स्थिति है। और अपनी ध्यान धारणा से हम बनते ही चले जाते हैं और अंत में समाधि में हम हो जाते हैं। तब हमें कहना नहीं पड़ता, स्वतः ही हमारा प्रेम परमात्मा का स्वरूप बनता है। और आज हम सामूहिक चेतना में उसी आनंद को महसूस करेंगे। आइए मां की करुणा में उस सत्य को अपने अंदर निर्विचार और निर्विकल्प समाधि में महसूस करें। तो सर्वप्रथम पूर्ण नतमस्तक भाव में मां के स्वरूप में अपने सर्व सबको समर्पित करते हुए हम अपनी कुंडलनी शक्ति को बांधेंगे, बंधन लेंगे और फिर कुंडलनी मां के स्वरूप का बयान 3 महामंत्रों द्वारा और उसके बाद श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता जी।
श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। तीन महामंत्रों और श्री गणेश मंत्र के बाद अब हम प्रणव स्वरूप मां की चेतना में जागृत हो गए और इस आनंद की सहज स्थिति में अपने सामने विराजमान मां को निहारेंगे। बिना विचार के मां को देखना हमारे सत्य स्वरूप को प्रकाशित करता है। हमारा रोम रोम मां को पहचानता है। क्योंकि मूल रूप में तो परमात्मा ही सर्वत्र है। और जब हम मां के चेतना सागर में एक हो गए तो हम भी मां के आनंद स्वरूप में जागृत हो गए। हमारा चित्त शांत हो गया और हम हृदय के आनंद में अंतस की गहन स्थिति में स्वतः ही फिसल गए। यही अंतर्योग है। यही चित्त का चैतन्य में एक रूप होना है। और पारें के धीरे धीरे आंखें बंद हो गई। आइए इस आनंद की दिव्य अवस्था में मां के
श्री चरणों की हृदय में पुकार करें। हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम बच्चों की हृदय की एक ही विनम्र प्रार्थना मां कि आपके पावन शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। आपकी परम अनुकंपा में हमें सत्य स्वरूप आत्मा का पूरा बोध हो और इस बोधावस्था में हम आपके स्वरूप में समाहित हो, परम श्रद्धा में सहज समर्पण को सहज में ही पालें। तब हम आपके आनंद में एक रूप अपने हृदय के प्रेम की अभिव्यक्ति चैतन्य लहरियों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में करें। हमारा हृदय भक्ति रस से आपके प्रेम की महिमा को गाता रहे और ये चैतन्य लहरियों के माध्यम से पूरे विश्व में सत्य प्रकाशित हो, अंधकार मिट जाए, अज्ञान मिट जाए और सत्य का सूर्य पूरी तरह से जागृत हो। सबके शून्य हृदय आपके प्रेम से भर जाएं। सभी सत्य साधक आपके प्रेम में एक रूप हो जाएं। यही हमारी हृदय की कामना है मां। श्रीमाता जी, हमारा हृदय से आपके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम मां। बारंबार अनंत कोटि प्रणाम। जाने जाने हमसे, हमारे पूर्वजों से, सहयोगियों से, सत्य साधकों से जो भी गलतियां हुई मां, उन सब के लिए क्षमा कर आप हमें अपनी शरण में ले ले मां। मां, उन्हें भी क्षमा करें जिन्होंने हमारा दिल दुखी किया हो। हे गुरु मौली मां, हे करुणामयी मां, हे परमानंद मां, हम अति सौभाग्यशाली आपके सानिध्य में, इस चेतना में जागृत आज विनम्र भाव आपके श्री चरणों में अर्पित कर ये इच्छा आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं मां कि हमें गुरु पद की अनंत आशीर्वादित शक्तियों से विभूषित करें, ताकि हम गुरु पद के ऊपर आसीन अपने प्रेम की अभिव्यक्ति सहज में ही आपको समर्पित करें और आपके प्रेम को पूरी दुनिया में प्रकाशित करने में आपका शुद्ध प्रतिबिंब बने। आज की ध्यान की इस प्रक्रिया में आप हमें अनुमति भी दें और हमारा मार्ग भी प्रशस्त करें मां। जय श्री माता जी। अब हम एक नई अवस्था में स्वयं को पाएंगे। जो हमारी
बाहर की वृत्तियों से, संसारी ज्ञान से अलग है। और ये है चेतना का आनंद। और इस स्थिति में कुंडली मां के सानिध्य में परमात्मा की अनंत शक्तियां कार्यरत हैं, हमारे अंदर भी और बाहर भी। और कुंडलनी जो अंतर्यामी है, जो मां है, जो गुरुओं की गुरु है, जो इतनी सक्षम है कि पत्थर को शीशा बना देती है और उस शीशे में मां का ही स्वरूप दिखाई देता है। वो स्वतः हमारे अंदर के समस्त विकारों को नष्ट कर देती है। जैसे सूर्य अंधकार को, और अब ये हमारे अंदर चेतना का प्रकाश धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर। हम और शांत हो गए। और हमारा प्रयत्न स्वतः ही छूट गया। क्योंकि ये चेतना रोम रोम में आनंद को गहनता के सागर में समर्पित करती हुई हल्का हल्का भार, लेकिन वो बहुत जल्दी निर्विचार चेतना में आनंद अवस्था को सहज में ही प्राप्त होता हुआ अब हम और शांत हो गए। हाथों में चैतन्य की ठंडक एक आनंददायी शीतल लहरियों के रूप में बदलती हुई अब हम इस स्थिति में अगर चित्त को बाहर लाना चाहें तो वो एक प्रयत्न हो जाएगा। लेकिन ये स्थिति अप्रयत्न की है, स्वतः है। और लगातार है।
हम और सचेतावस्था में आ गए। हाथों की रोम रोम की चैतन्य लहरियों की संवेदना और सूक्ष्म भाव में परिवर्तित हो गई। बस हो रहा है। इस होने में ही हमारा स्वरूप समाया हुआ है। और गहन शांति में निर्विचारिता की सूक्ष्म स्थिति में आ गए। और वेदों का उद्घोष वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं, हम आत्मा हैं। ये भाव जागृत होता है। अब ऐसे हम अखंड मौन में समाहित हो गए, जहां केवल शांति है। हमारा सब कुछ शांत हो गया। रोम रोम को कुंडलनी मां निरंजित करती हुई ये समाधि से पहले की स्थिति, जहां हम चेतना से एक रूप और चैतन्य के आनंद से नहाकर
एक स्थिति में हम आ गए। अब हमारा चित्त चेतना के सागर में एक रूप हो गया। चित्त सहस्त्रार से ऊपर परम चेतना के महासागर में समाहित हो गया। अब इस स्थिति में शब्दों के मायने भी अधूरे पड़ गए। और यही समाधि की अवस्था है। दुख सुख से परे वही ब्रह्म पद, तोहे संग समाए। सगुण माया स्वरूप पर ब्रह्म के निरानंद में डूब गया। और यहीं से हमारा ध्यान शुरू होता है।
अब क्या बोले। इस सहज हृदय समर्पण में आइए अपने परम गुरु आदि शक्ति मां के मुखारविंद से गुरुपद की स्थितियों को अपने अंतस में कैसे पाना और कैसे जानना है ये सुने। और एक और छोटा सा वीडियो मां का है। मां कौन है, ये दोनों वीडियो आइए इनको देखें और उस आनंद को महसूस करें। जय श्री माता जी। I bow to all the Sahajogis of the world. It is very heartening to see so many of you assembled here to do the Guru Puja, to worship your Guru in person is regarded as the highest blessing. But in my case, it's a very different combination that I am your mother and your Guru. So you can understand how Sri Ganesha worshipped his mother. You all are created in the same image of Sri Ganesha, who worshipped his mother, and then he became the Adi Guru, the first Guru. He is the primordial essence of mastery. Only the mother can make the child a master. And the motherhood in any Guru, whether male or female, can only make the disciple a Guru. So first, you have to become the prophets and develop that motherhood within yourself. Then you can make others also prophets. Now, to become a Guru, what do we have to do after our realization? Guru word means gravity. Gravity means a person who is grave, who is deep, who is magnetic. Now, as you have learnt in SahajaYoga, that realization takes place in complete effortlessness. So normally a Guru tries to make his disciples effortless. It is called as Prayatna Shaithilya, means relax your efforts. Without doing anything, you got your Prayatna Shaithilya, otherwise Kundalini would not have risen. Then the second stage is Vichara Shaithilya, the thoughtless awareness. This also you got it without doing anything. And the third is complete negation of thought, abhava, and the bliss of peace. So one has to understand that you have to pass them through 3 stages. First, when you get your realization, all these things come spontaneously for that moment. When you raise the Kundalini of others, these things happen to them spontaneously. You too have that power now to raise the Kundalini of people and to establish it in them. But we must understand why it has to be done that way. Why we have to have Vichara Shaithilya. Because when you project any thought
It is artificial. It is not reality. Thought always stands between you and the reality. When you put in an effort, you stand against becoming. For example, if I have to cure you, I just put my hand and finished. No effort. Because I am that. You get your realization because I am that. I don't put in any effort, I don't think about it. I am that. Just looking at someone, it can be done. Just putting attention to someone, it can be done. Just with a small desire, it can be done. Because you are that. You can mold it the way you like. You can get an example from gold. Now gold is untarnishable. It does not have to think it is untarnishable. It does not have to put in an effort it is untarnishable. It is. So to be, you don't have to put in any effort. If you have to put in an effort, that means you are not yet that. If you look at the sun, it shines. It doesn't have to put in effort to shine. So to be that, if you have to put in an effort, that means you are not that. You are trying, you are artificial. The flowers are beautiful, so they don't have to beautify themselves. And this is what one has to understand, that innately if you are that, if you have already become, then what is the need to put in any more effort? But when we say these things, you see, then people think you have to be lethargic, that you need not do anything. You become a guru without doing anything. That's why at the very outset I said it goes in stages. So the first stage is of Sri Ganesha. How he surrenders to the Shakti, to the Mother. That is the beginning. If one cannot surrender, that doesn't mean you don't do anything. But surrendering means the worship, the respect of the higher, the obedience to the higher, not to argue it out, not to react, acceptance, absorption, like a child absorbs the milk of the mother, without questioning, without reasoning. That's why Christ has said, you have to become like children. But if you are questioning, then you are no more a child. So first is the state which you have to develop, is the childlike state. But child, which is a realized child, which has to have a gravity. If you can develop childhood first, then everything takes proper course. Because maturity cannot take place unless and until you start from the very beginning. And gravity means maturity, not frivolousness. So now the quality of Ganesha, as you know, is that he has viveka, means he has discretion. He has means he is discretion. So try to develop your discretion power, so that Sri Ganesha gives you the wisdom, subuddhi, wisdom. And this is why you have to have a dependence on Sri Ganesha. So at this point, you have to make a negation of efforts. Like whatever are efforts anti-Ganesha or anti-innocence must be negated. So the negation of effort is to be achieved by negating whatever is the effort. Means the effort of negation. So in the beginning you will not be effortless. You will have to put in effort. Like Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. So how do you make your eyes innocent? In SahajaYoga we have a method
by which we try to distract our eyes from effort that makes it adulterous. Like we try to put our attention, our eyes on the Mother Earth, on the grass, on the trees. So the avoiding of the effort itself is effort. So those people who have come now recently have to understand also that they have to put in all kinds of efforts to stop the efforts. For example, some people are used to very comfortable life. They may talk of all kind of renunciation. When it comes to comfort, they want to have comfort. Such people should try to get out of the habit of comfort. Sleep on the ground, sleep on the Mother Earth. Some people have an attention which is all the time looking this side, that side, cannot see to one point. So fix your attention. So gradually you will find, you will discipline yourself. So the effort that you put in is very important in the beginning of Sahaja. Another thing is very common in the West is the harsh tongue, the sarcasm and hurting others is a very subtle way of violence. Or if they are really blunt, they can start with ego expressions also. I. Such people should stop talking completely. Make an effort to stop. Just don't talk. Now watch your mind. Is it trying to talk something sarcastic, nonsensical? So this watching also requires effort. So to sprout the seed is easy, but then one has to put in the effort to look after the little plant. And when it matures, then it's on. So the effort should be made to protect yourself against the mind which you have built in through your ego or superego that goes into the wrong direction of effort. But sometimes be very careful. You have to be discreet. And the best way to be safe on discretion is to keep in the center. Never go to any extreme of anything. For example, some people are fond of music, say. So they'll go on after the music part of it. Some people say are fond of poetry. Then they'll go after the poetry. There is nothing wrong in it. But whatever you achieve in all these things must be brought back to the collective and must be enjoyed by everyone, and you should also enjoy what others have. For example, somebody is a very learned man and a dry person. So he has to make an effort to make himself sweet. So try to neutralize your extreme nature by coming in the center. And the best way to say is, I like everything. The way you keep me, I am happy in that. And to suggest yourself that I am the peace. Suggest, or to suggest, I am the satisfaction. I am the dignity. Try to impose these artificialities upon yourself of these virtues and righteousness. And then ask yourself, if I am dignified, how can I do such a thing? Ask yourself. You judge yourself with those. For example, somebody is a miserly person and he says, oh, you must be generous. Then you call him a hypocrite. But supposing the miserly, you see, questions himself, then he is not a hypocrite. So when you put all these artificial so-called values upon yourself, sort of a goal, and then try to achieve that goal through your own effort, then you become that. So automatically you criticize yourself and you don't criticize others. And you know
what's wrong with you. Because what's the use of knowing what's wrong with others? It is like England trying to improve the conditions in India and India trying to improve the conditions in England. But in this also, human brain has an escape. When they want to criticize themselves, they find a pouch called the left Vishuddhi and become settled there. The more cunning you are, the more clever you are, the worse is the left Vishuddhi. Then you put everything there, settle down nicely to stagnate, to get all kinds of filth in it, and to be settled with yourself nicely. It's like any lousy housewife. She takes all the dirt of the house and all that and piles up into a room, locks it up, and thinks, oh, she has been very efficient. You have to face it and you have to correct it and see to it. And that's how you become powerful. Because if your machinery is out of gear, what's the use of improving somebody else's machinery? And when your machinery is out of gear, you put it in a lock and key and lock it up and say, now it's all right. Or you blame somebody because of this, because of that, something else other than it. Thank God to SahajaYoga today that you all have got realization, so I don't have to do all that cleaning. You can do yourself. So in short, you become your own guru to begin with. You try to tell yourself, separate yourself from yourself and say, hello, sir, how are you now? Come along. But in SahajaYoga, you see, people suddenly assume, you see, a big sort of ego nonsense, and they think they are big gurus, you see, big great people, avadutas. And if you ask them, they say, Mother, I loved you very much. So they think if they loved me, then it is my duty that I should really keep you clean. That's not the attitude of a guru. What guru does is to purify himself and others and give those flowers to the deity. Till you all become gurus, I am your guru. But once you become the guru, then I become your deity. Jusqu'à ce que, Srimataji, please, could you repeat? Till they are not yet gurus, I am their guru. Till they reach that state. Once they become the guru, then I am their deity. Like all the gurus, we can say Muhammad Sahib, he talked of Allahu Akbar. He talked of the Holy Ghost. He talked of the resurrection because he was a guru. And whatever he had to say, he said it with full confidence, pointing out towards the point where he looks or where he gets his guidance from. Like Moses. Like Christ also put his two fingers denoting his father. So, till you become your own guru, you have to put in effort in the beginning. Then gradually you can achieve it effortlessly. Effortlessness is not to be certified, but you can verify it. A person who is discreet, in his presence others become discreet. A person who is honest, others in his presence become honest. It is said in Sanskrit language, Yatha Raja Tatha Praja. As the king is, that's how the subjects are. When you are the guru, you are the example. You have to be the example. Now, I have seen people who are gurus, who call themselves gurus in different varieties and different type of lives, like professors, teachers, you can call them not spiritual gurus. They too, when they try to follow a mundane type of life, not of something exceptional, then their disciples lose faith in them. Even political leaders, when supposing a political leader is licentious, he has weaknesses, then the people who try to follow him have no respect. So they too have to have a personal character, a personal value system. So what about the spiritual gurus then? They have to be excellent people. There should be no two type of life, one outside, one inside. When the outside and inside becomes one,
then it is effortless. And that is what one has to do, the inside and the outside. One has to work it out from inside. For that, you cannot bring the outside inside, but inside has to go outside. So this is the beginning of Antar Yoga, the inner yoga. At the second stage, you have to become thoughtless. This is very important in the West. Because they live in thoughts, they don't have other problems of a gross nature. For example, they are brought up in such a way that they are frightened of law. They are brought up this way, they'll keep all their carpets clean, everything clean, you see, very particular about keeping every place clean. All the gross things they keep clean. And then when they try to adjust themselves, they adjust within. Outwardly they are gentlemanly, but inside, in their thought, they are not clean. In their behavior, they are not clean. Their eyes are not clean. It's poison inside. And they like that poison to be taken out. Sometimes it comes out as sarcasm. It comes out as their sinister acts of aggression on other countries. They may plan out the complete destruction of the world. And they don't think there's anything wrong in it. Because it's an ideology for which is a thought they are fighting for. As long as there is an ideology, there's a thought, there's some sort of a sublime talk, then they can do what they like. This filth is very sophisticated. Like the people who don't take their baths can use some artificial things to get a fragrance. Inside has to be clean. And that's why first the efforts are to be made to have good thoughts. Watch your mind. How does it think about others? I would say racialism is one of the diseases of the same thing. I've seen people who are very well placed, sophisticated, wear immaculate dresses. When it comes to a person from a developing country or from, say, another color, complexion, they come out with a remark. Even if they are Sahajogis, I've seen they do it. I'm saying this for the Sahajogis and not for others. That suddenly that dead stuff which we call as dead becomes alive. So the mind is dirty, full of lust, greed, and anger, jealousy. And that's why we have to be very, very careful. Those people have become sophisticated, their weaknesses have also become sophisticated. And that's why jealousy is a common disease. Like the other day I asked someone why the father is angry with the son and with his own brother. So the answer was because the brother is looking after the son in London. I mean, he should be... Normally any person should be thankful that somebody is looking after my son in my absence. But the fellow is jealous because of possessiveness. And the possessiveness comes out of insecurity. And insecurity comes within us because we make others insecure. There are many reasons for insecurity, but one of them is because we are ugly and we see that ugliness in others. Now this inside filth has to be taken out with greater effort than the outside filth. That inside filth you can watch and see within yourself. Some people try to dominate others, to tell them things, just for the bossiness of it. For the bossiness. Now watch out. First of all, have you bossed yourself enough? Have you mastered yourself enough? Are you master of your own, or you are still lacking in that? Those who have not mastered themselves want to have others to master them. But the one who is the master of oneself need not master anyone. He becomes the master. He doesn't have to put in any effort, he masters. And there are so many tricks by which he can master. So many things by which he can correct. He may not say, he may not do anything, but just he manages.
Everyone learns a lesson without his doing anything about it. But they know that somebody is a master of masters. Maybe such a person will be very unassuming, simple, innocent looking. But that's Mahamaya. That's the illusion. Mais ceci, c'est l'illusion. So the person who is that power doesn't want to show it outside. On the contrary, it shows in such a way that people know it. I mean, the way things happen in life, we start understanding that we don't have to put up any show. Someone knows everything. When we have someone like that, try to follow. So in the third stage, the effort should be to follow your Guru, who is a Sadguru. Now, that one becomes the one, a pattern which you have to follow. But in this also, Sahajogis can be very superficial. One of the Sahajogis used to wear a shawl in a particular way. So I sent him some other Sahajogis that he will try to help them. He can be their Guru. They all started wearing shawl the same way. It's not outside. You have to follow the inside. So when you become the Guru, become the Guru. You become. It's such a short method, just to become. Now if you face yourself, you'll know that there are still some steps you have to cross to become. Even now when I'm lecturing to you, you are thinking of others. Oh, mother is talking about him. Not about yourself. That is how one has to take it inside, the absorption from your Guru, that you have to see yourself. Now, that is very important if we have to become the prophets who will make others prophets. Now the higher stage is that your Guru becomes a deity. When you say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, they go up to that point, but nobody says Guru is Devi. You can have a higher stage than Brahma, Vishnu, Mahesha. Because the Guru state is where you have the innocence of all this Brahma and Mahesha and Vishnus. The power of innocence. But then ultimately they say Guru Sakshat Parabrahma. And Parabrahma is the power of the mother that is flowing through you. So you become the instrument of that Parabrahma. But how? Not only by becoming, but now becoming the reflector of your deity. To develop yourself into the reflector from Guru to that state. At that state you start controlling all the elements. That's why all these incarnations of Adi Guru had control over elements. Brahmadeva is absolutely manifested through them. So out of Ganesha, which is the Adi Guru, he is born, or he is manifested through these three Brahma, Vishnu, Mahesha. And then he comes out as Brahmadeva with 4 heads. 3 of Brahma, Vishnu, Mahesha and the 4th of Sri Ganesha. So Brahmadeva becomes the symbol of Guru. And as you know, Ganesha is Chatwari, is 4 all the time. He becomes these 4. Expression in manifestation. And as you become Brahmadeva, at that stage you control all the elements. So today I have tried to explain to you the different stages of Guru Pada, the state of Guru. And one should understand, whatever we are today, we are extremely blessed and fortunate people. That in this short time
you started from a scratch in the mud and you have become the lotus. The lotus will invite many insects and will convert them into lotuses. Madhukara, they call it Madhukara. The ones who are selecting the madhu, the nectar, the honey. When they get the nectar, they become themselves the lotuses. The whole dirty, filthy pond is covered with those lotus flowers. And one lotus, who is the Guru, grows higher and then is given to the goddess on which she resides. She resides in the heart on the platform, beautiful platform that this lotus has created. But to bear her on your heart, you have to have a heart. There are so many qualities of a Guru, which I have told you. All the best qualities, the 12 qualities of all the signs should be completely manifested in a Guru. And the owner of those qualities is Shiva. So that is how the essence of Shiva out of Brahma, Vishnu, Mahesha, the Mahesha's qualities should shine through you. The Vishnu's qualities of dharma, first you have to make an effort to be dharmic, to be balanced. Then you ascend. Then you become one with the Virata. And then you can give dharma to others. So one has to know that stage by stage it happens to you and you do not become a hypocrite. But you become real. And the reality is shown by its own being. That is how you become. So understand the reality within yourself, face it, solve it. But mostly I have seen when I tell anybody, no mother, I am not like that. No mother, I didn't say like that. That is not true. Some such people would like to sit in front or sort of try to show off or anything. But that's not important. What is important? How much you know yourself. It is self-realization. Once you develop that, then you know the others in the real way and not artificially. And then the enjoyment is complete. Like a bee will never go to an artificial flower. But human beings have to become the bee. The Guru does not need to say that he is the Guru. Today I bless you. I have completed the 12 years of Gurus. Bonjour. And you should really assume the Shiva's powers within yourself. That is my body, my mind, my heart, everything Toute chose. has spared no efforts to completely indulge into this cleansing, into this making, into this becoming of you people. I request you now Maintenant. that please do not waste my efforts. Look at yourself, help yourself, Faites-les-vous. and try to rise higher and higher, Yes. to become yourself. When you become yourself, then you become the Guru. And once you become the Guru, you become Brahmadeva, Mahesha and Vishnu. So first you are made in the pattern of Ganesha, then Brahma, Vishnu, Mahesha. But very much depends on your readiness to do it. And most of all, your honesty, sincerity. I hope Sri Ganesha will give you the wisdom to understand. The Shakti will give you Shakti to work hard. And Shiva will give you joy. Sadashiva will give you the joy so that you proceed in your establishment. May God bless you. Que Dieu vous bénisse.
Just put your hand on your heart, both the hands, and just try to feel. Your mother is Adishakti. She has created all this universe. She has created all this world. And she is for your protection. Even Sri Krishna could not protect Pandavas. They had to go in the forest, they had to suffer. But not Sahaja. As soon as I come to know about your problems, my attention can work. Sri Rama himself had to go to jungles. All this is given to you, this protection, because you are seekers of truth. And the truth is that I am the Adishakti incarnated. Once this truth becomes one with yourself, there is nothing to fear. Because all the deities know this fact. They know about this incarnation very well. They are all prepared for it. And they'll do anything to substantiate your belief. In every way they are trying to give you my photographs in the sky, this, that, all sorts of things. God knows what they are going to do today. They are so anxious. They are behind the stage, before the stage, all sides of the stage, listening to me, feeling happy that I am telling you the truth. But the way they recognize and the way they act, they never disobey. If you behave in the same manner, you are completely protected from all these problems I have told you. Now I won't say you shouldn't hate anyone, you shouldn't do nothing of the kind. I wouldn't say you should not steal something. I wouldn't say that you make money, don't make money out of such a nothing. I don't even say don't drink, don't smoke. I never said so. But automatically, once you know whom you are facing, in whose protection you are, automatically you will do that. Automatically. You will have no fear. Once you have recognized, you will have no fear from anyone. And the more you show that recognition, the more you realize it, you get higher and higher. Not only spiritually, but every way, mentally, socially, economically, politically. It's very remarkable that not only that you recognize me as a mother who loves you very much, but a mother who is powerful to protect you. It's very powerful. If you realize that, and if you feel that within your heart, supposing I correct you sometime, instead of feeling sad, you should see that how fortunate I am that Adishakti herself is correcting me. She is taking interest in me. How fortunate I am to be born at this time, to be with her in her great work. What have I done? This recognition itself will fulfill all the incarnations of Navratri. जय श्रीमाता जी। माँ के इतने अनमोल वचनों को सुन करके आइए
निशब्द चेतना के आनंद में समर्पित हो जाएं। 5 मिनट इस ध्यान अवस्था का आनंद लें। जय श्री माता जी। 3 महामंत्र।
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज 2 प्रवचन आपने वीडियोस के माध्यम से देखे और सुने। जो दूसरा वाला है वो YouTube से लिया हुआ तकरीबन 4.5 मिनट का है ये, और इसका टाइटल दिया है प्रत्येक सहयोगी को श्री माता जी की ये स्पीच जरूर सुननी चाहिए। किसी नवरात्रि पूजा से ली है, इसका लिंक मैंने देखा नहीं, लेकिन ये YouTube पे अवेलेबल है। और श्री माता जी ने अपने बारे में जैसे डिक्लेयर किया कि मैं आदि शक्ति हूं, और ये सुरक्षा कवच आपको हमेशा वो स्थिति देगा जहां आप एक आनंद में आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा सुरक्षा कवच है जो अभेद्य है। मां ने कहा कि आप सहयोगी हैं, आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं। श्री राम को वनवास जाना पड़ा, श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की, लेकिन अंत में उनको भी वन वन भटकना पड़ा। मां कह रहे लेकिन आपको नहीं, क्योंकि ये आदि शक्ति का जो पूर्ण अवतार है वो समस्त शक्तियों का स्रोत है। तो हम सहयोगी इस मां के सुरक्षा कवच में, मां के प्रेम की इस महानता में सहज में ही समर्पित हूं। और दूसरा जो पहले वाला प्रवचन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। टाइटल है उसका गुरु पूजा 1984-0714।
14th of July 1984। लिसन स्विट्जरलैंड में ये माँ का गुरु पूजा का प्रवचन है। माँ ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। पहले तो माँ ने 3 स्थितियों की बात कही, प्रयत्न शैथिल्य, विचार शैथिल्य और अभाव। प्रयत्न शैथिल्य, जहां हम पूर्व जन्मों के सुकृतों के फल स्वरूप अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा के सानिध्य में पा लेते हैं। आत्म साक्षात्कार जो मिला, जिसमें हमें चैतन्य लहरियां मिली और हम माँ की चेतना में बनते चले गए, वो एक स्थिति है। दूसरा माँ ने बताया विचार शैथिल्य, जब हम मन से परे चले जाते हैं, विचारों से परे, तो उस स्थिति में हम निर्विचार समाधि में आ जाते हैं। और तीसरा माँ ने बताया अभाव, जहां निगेशन है, जहां जो माया स्वरूप में है वो स्वतः ही हमारे स्वरूप से हट जाता है। और माँ ने बताया कि इनको पाने के लिए आपको क्या करना है। तो श्री माता जी ने बोला कि जैसे श्री गणेश को बनाया गया, उसी पैटर्न के ऊपर आपको भी बनाया गया है। और श्री गणेश केवल माँ के चरणों में समर्पित है, तो आप भी अपनी माँ को, अपनी कुंडलनी को, आदिशक्ति को पहचान लेते हैं। तो ये पहला है कि आप अपनी माँ को पहचानते हैं। और जब आप माँ को पहचान लेते हैं तो माँ की सुरक्षा में, माँ के गुरु स्वरूप में आप एक पद को पाते हैं। माँ कह रहे हैं वो पद है आपका गुरु पद। वो आपके अंदर धीरे धीरे माँ देती चली जाती हैं और आप उसको अपने अंदर स्थापित करते चले जाते हैं। माँ कह रहे हैं जब तक आप स्वयं गुरु नहीं बनते तब तक मैं आपकी गुरु, क्योंकि मैं आपको करेक्ट करती रहती हूं। जैसे कुंडली हमें, अगर हमारी वृत्ति ईड़ा पिंगला में जाए तो कुंडली हमें बताती है। तो ये कुंडली का बताना ही माँ का, गुरु का कार्यरत हो रहा है। और माँ कह रहे हैं जब आप स्वयं गुरु हो जाते हैं तो फिर मेरा स्वरूप आपके लिए गुरु से ऊपर चला जाता है। वो है देवी स्वरूप, जो पर ब्रह्म निराकार अनंत शक्ति है, वही मेरा स्वरूप है। तब आप मेरे में समर्पित हो जाते हैं। लेकिन ये चीजें स्टेज बाय स्टेज हमें मिलती। माँ कह रहे हैं आपके अंदर पहले श्री गणेश स्वरूप जागृत होता है, फिर ब्रह्मदेव और विष्णु और शिव स्वरूप जागृत होता है। और इसमें क्या है, माँ कह रहे हैं विष्णु स्वरूप में आप अपने धर्म में स्थापित हो जाते हैं और शिव स्वरूप में आपके अंदर शिव की शक्तियां आती हैं, जो आनंद की 12 शक्तियां हैं वो हमारे अंदर आती हैं। और ब्रह्म स्वरूप में माँ कह रहे हैं आप एक गुरु पद को पा लेते हैं, जिसको माँ ने बताया चतवारी। जैसे ब्रह्मा के 4 मुख हैं, वैसे ही आपके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री गणेश की अबोधिता का एक स्वरूप आता है, जिसमें आपका आधिपत्य होता है इन जो एलिमेंट्स हैं। और फिर आप इससे ऊपर चले जाते हैं, जहां पे आपके अंदर केवल शिव का स्वरूप ही जागृत होकर के मैनिफेस्ट होता है। और आप मन से परे जाकर के उस चेतना में जब जाते हैं तो आप सुरभित हो जाते हैं। और उस सुरभित चेतना में आपका जो कमल है वो ऊपर चला जाता है और वहां आप अपनी देवी को समर्पित हो जाते हैं। उस आपके निर्मल हृदय में माँ का वास रहता है, वहीं माँ के
श्री चरण रहते हैं और वहां आप स्वतः ही मां की पर ब्रह्म शक्ति में समर्पित हो जाते हैं। आइए मां का हृदय में धन्यवाद करें। हे परमानंद मां, हे परम करुणामयी मां, कैसे हम आपका धन्यवाद करें मां। हम ऋणी हैं, आभारी हैं सदैव मां, जो आपने हमें दिया वो हमारे शब्दों के बयान से परे। जो आनंद, जो ध्यान का आनंद, जो सामूहिक चेतना का आनंद, जो आपकी अमृत वाणियों के माध्यम से हमारे चेतना के विकास का आनंद, इन सभी आनंद की स्थितियों के लिए हम सदैव आपके श्री चरणों में समर्पित हैं मां। श्रीमाता जी, हमारा हृदय आपके प्रेम को पूरी तरह से संजोए। हमारा ये चेतना का पुष्प आपके स्वरूप को सदैव हृदय में धारण करे। आपकी चेतना की अनंत शक्तियां पूरे विश्व में फैले और हमारा ये स्वरूप पूरी तरह से आपके प्रेम की अभिव्यक्ति करे। हमारा तन मन धन हर पल हर क्षण सर्व सब आपके सत्य स्वरूप को पूरे ब्रह्मांड के सत्य साधकों के हृदय में जागृत करने के लिए समर्पित हो, उत्सुक हो, तत्पर हो। यही हमारा संकल्प है मां, और इसी संकल्प को आशीर्वादित कर दे मां। हे मां, जाने अनजाने आज के ध्यान के दौरान अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा करके हमें क्षमा कर दे मां। श्रीमाता जी, हृदय से हमारा अनंत कोटि प्रणाम मां, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम मां। जय श्रीमाता जी। अगला सेशन हमारा शनिवार को होगा। जय श्रीमाता जी। Oh